Good morning, class. Today we'll start with the next topic and we will complete the chapter today. The topic is plugging back of plugging back of profits or retained profits. जब कंपनी अपने ही प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा सेव करके रखती है फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज़ को कवर अप करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड द रिटेन प्रॉफिट. This amount of profit is not distributed among shareholders as dividend, so it is called the reserves also, as we discussed in accounts in the chapter provisions and reserves. The part of the profit which is retained by the businessman for future uncertainties, it is called the plugging back of profit, or it is also known as self financing, because it is our self finance जो हम retain करके रख रहे हैं. Now the advantages: cheapest source of finance. This is the cheapest source because you are retaining your profits, so आपको किसी को भी कुछ भी पैसा नहीं देना. Safety from trade cycles. When there are ups and downs in your business, and if you have some reserves, they will protect you in the situation of ups and downs. Stable dividend policy. You will use this amount of reserve for the distribution of dividend in the year of losses if you want to make the policy of dividend stable every year. Easy expansion of company can use these reserve for the expansion purpose also. Increase in the value of share. If you are retaining a part of your profit as reserves, it means the situation of your company is good, you are improving, your company market value also increased. Increase in the capital formation. With the help of this, you will encourage the savings for your country. This will generate more capital formation, because if savings are increased, then the capital formation in your country is also increased. Some limitations. The first is danger of monopoly. Monopoly hoti hai when the capturing is only of one person in the complete market. So if you are retaining a part of most of your profits, the situation of monopoly will be arise, because your maximum proportion is taken as reserves. So this will increase the price of your products and commodity. This will be not a good situation. Danger of overcapitalization. If you are retaining excess amount of profits, तो प्रॉफिट्स एक्स्ट्रा आपके बिजनेस में वेस्ट पड़ा रहेगा, जिसकी वजह से कैपिटलाइजेशन ओवर हो जाएगा. पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस टू द शेयर होल्डर. Obviously, if you are retaining a part of profits, the shareholders are dissatisfied because you are retaining the profit, not distributing the profit among the shareholders. As you can see, there is a cut on the topic, so you may cut this also. Special financial institutions, cut this one. Then the public deposits, trade credit, intercorporate deposits also, cut this one. Next we have the topic. The important topic is GDR, ADR and IDR. These are the global depository receipt, American depository and Indian depository receipts. This is कि कोई भी कंपनी, इंडियन कंपनी अगर फॉरेन में अपने शेयर्स इशू करना चाहती है, या फिर फॉरेन कंपनी इंडिया में अपने शेयर्स इशू करना चाहती हैं, सो बाय यूजिंग दीज काइंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट दे कैन इशू देयर शेयर्स इन द फॉरेन और इन द इंडियन मार्केट. So when you are issuing your shares or debentures in the foreign market, that is called euro issue. Means you are issuing your shares or debentures in foreign exchange, foreign markets. That's why it is known as euro issues. And obviously you need foreign currency for such kind of transactions. So we are issuing GDR, ADR, and foreign companies issues their IDR in our country. And the investors who want to invest or purchase the shares of our country, or if I want to purchase the share of foreign country, with the help of these receipts, these documents, you may issue your shares and do the transaction. So we will discuss these three one by one. The first is GDR. GDR is a global depository receipt. When a foreign company want to issue their shares in the Indian market, they will issue their certificates in the Indian market by the name GDR, Global Depository Receipts. They issue their shares in US dollars in the Indian market. For example, Reliance Industries issued their this is GDR key when we are issuing our share in the foreign market, not the foreign companies. Indian companies, when they issue their shares in the foreign markets, they need to issue such shares in US dollars, and this is called the GDR. For example, they give an example कि if Reliance Industries want to issue their share in the foreign market, मतलब अगर रिलायंस इंडियन कंपनी है, उसको न्यूयॉर्क में या अमेरिका में अपने शेयर्स अगर इशू करने हैं, सो विद द हेल्प ऑफ GDR दे कैन इशू देयर शेयर इन द फॉरेन मार्केट. Now some features of GDR. GDR can be issued in the American and European stock exchange. आप लोगों ने स्टॉक एक्सचेंज का नाम तो डेफिनेटली सुना होगा. सो इफ रिलायंस वांट टू इशू देयर शेयर इन अमेरिका एंड यूरोपियन मार्केट, फर्स्टली दे वांट टू गेट रजिस्टर्ड themselves in that stock exchange.
One GDR is always more than one share. For example, it is equal to 2 share, means the value of one GDR is always more than one share. The bearer of the GDR get them converted into shares. The holder of GDR, जो GDR शेयर परचेज करेगा उसको कंपनी की मैनेजमेंट में कोई भी वोटिंग राइट नहीं होगा. The dividend on GDR is quite like the dividend as you get earned on the shares. GDR is always in US dollars. Now we have a procedure for the issue of GDR. This is if Indian company want to issue their share in the American stock exchange. Firstly, we need the issuing company. Suppose the issuing company is Reliance Group, so this is the issuing company. They will contact with their domestic custodian bank. Reliance Direct not issue their share in the American stock exchange. Reliance company को पहले इंडिया के एक बैंक से डील करनी होगी जो कि फॉरेन के बैंक से डील करेगा. So we will contact with the domestic bank. Then the domestic bank contact with the overseas bank. जो दूसरी कंट्री में दूसरी कंट्री का जो बैंक है, हमारा इंडियन बैंक उस कंट्री के बैंक के साथ डील करेगा. एंड दैट ओवरसीज बैंक इशूड सच शेयर्स सिक्योरिटीज इन देयर फॉरेन मार्केट एंड इन्वेस्टर्स विल परचेज द शेयर्स. Advantages: getting foreign capital. Obviously you will get the foreign capital if you issue share in the foreign market. More liquidity. Liquidities, if you want to get converted your shares into money with the help of that market, you can easily sell your shares in the market. Increase in the goodwill of the company. If you are issuing shares throughout the country, तो obviously your goodwill will increase. लोअर फ्लोटेशन कोस्ट, इन सब को इशू करने में हमें एक्सपेंसेस ज़्यादा बॉर्न नहीं करने पड़ते. बेटर शेयर प्राइसेस. द शेयर प्राइसेस ऑफ योर कंट्री इज़ गुड एज कम्पेयर टू द डोमेस्टिक मार्केट इफ़ यू आर इशूइंग योर शेयर्स इन द फॉरेन मार्केट. स्कैटर्ड शेयर होल्डर्स. योर शेयर होल्डर्स आर स्कैटर्ड नाउ. अब आप अपनी कंट्री के साथ साथ दूसरी कंट्रीज़ में भी अपने शेयर होल्डर्स इशू कर चुके हों. नेक्स्ट वन इज़ ADR. It is American Depository Receipt. American is when you want to issue your shares only in the American Stock Exchange. If Reliance want to issue their share only in America, then they used ADR. जो GDR था उसमें अमेरिका और यूरोपियन दोनों स्टॉक एक्सचेंज थी, इसमें सिर्फ यूरोपियन अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज है. The features are same. You can issue your share in American Stock Exchange. One share is more than one. It is 2 share value. The holder get converted into share. They don't have any voting right. They will get shares return as dividend. And the ADR is again in US dollar. The procedure is again the same. Firstly, the issuing company contact with their domestic bank. Then domestic bank contact with the foreign bank. Foreign is American bank here. Then they will issue the securities in the American investors, American stock exchange. The features, advantages are again the same. Some Indian companies they are issuing their shares in ADR और GDR. यहाँ पर कुछ कंपनीज के नाम हैं जो अमेरिका और या यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करती हैं. लाइक बजाज ऑटो, दे आर इशूइंग ADR नो, GDR येस. ये स्पेशली अमेरिका में इशू नहीं करती, ये अमेरिका और यूरोपियन दोनों स्टॉक एक्सचेंज में इशू करती है. लाइक ICICI ये ADR भी इशू करती है और GDR भी इशू करती हैं. नेक्स्ट वी हैव IDR. IDR इज इंडियन डिपोजिटरी रिसिप्ट. इफ नाउ the foreign company, for example the American company want to issue their securities in Indian market, so they will issue their shares in the Indian market by the name IDR. अब इंडियन इन्वेस्टर्स उन फॉरेन कंपनी के शेयर्स को परचेज करेंगे और अब हम अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे फॉरेन कंपनीज में. तो उसके लिए हमारे इंडिया में सेबी एक सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है जिसके अंडर हम पहले अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाते हैं. तो जितने भी सिक्योरिटीज़ की इशू वगैरह होती हैं सब सेबी के अंडर होती हैं. सो फर्स्टली द फॉरेन कंपनी गेट रजिस्टर्ड देमसेल्फ एज पर द सेबी नॉर्म्स इन द इंडियन मार्केट. सो फॉर दिस वी नीड टू ओपन अ डीमेट अकाउंट जिसमें आप जनरल पब्लिक इंडिया में अगर आपने इंडियन इन्वेस्टर्स को फॉरेन इन्वेस्टर्स के शेयर्स परचेज करने हैं फॉरेन कंपनीज के, फॉर दैट दे नीड टू ओपन अ डीमेट अकाउंट इन द बैंक. सम फीचर्स. IDR आर इशूड बाय एनी फॉरेन कंपनी इन द इंडियन मार्केट. तो उसके लिए उनको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में. द वैल्यू ऑफ वन IDR इज मोर देन 1. इट मे बी 10 शेयर. दे विल गेट द डिविडेंड. द नेक्स्ट दे अगेन दे डोंट हैव एनी वोटिंग राइट. द होल्डर ऑफ IDR इसको कन्वर्ट करेगा शेयर्स में, बट उसको एटलीस्ट इशू करने के 1 साल तक उन शेयर्स को अपने पास उसको रखना ही पड़ेगा. IDR ऑब्वियसली रुपी डिनोमिनेशन में होगा बिकॉज इंडिया में रुपी की करेंसी चलती है. द प्रोसीजर. फर्स्टली अब प्रोसीजर उल्टा हो जाएगा. फॉरेन कंपनीज द इशूइंग कंपनी दे कॉन्टैक्ट विद द ओवरसीज बैंक. देन द ओवरसीज बैंक कॉन्टैक्ट विद द इंडियन बैंक and then the Indian investor invest their money
in the foreign securities. Advantages: it provides an additional investment opportunity to the Indian investor. It provides a new product to the Indian stock market. It reduces the risk of the investors also. Now, what are the advantages to the foreigners? They will get the facility to foreign companies. They will issue their shares in the Indian markets. उनकी कंपनी की पॉपुलैरिटी इंक्रीज होती है. अगर फॉरेन कंपनीज को कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, सो इंडियन इन्वेस्टर्स की, इंडियन सेवर्स की पैसे को लेकर वो अपनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकती हैं. सो दिस इज़ अबाउट दिस चैप्टर. एंड फ्रॉम दिस चैप्टर, आई होप दिस चैप्टर इज़ क्लियर टू यू. अब इस चैप्टर के बाद हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है. अकाउंट्स का सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे और साइड बाय साइड हम बीएसटी की रिवीजन करते रहेंगे. अगर आपको कोई भी कहीं भी डाउट है, यू कैन आस्क टू मी. थैंक यू सो मच.